Okay. Good morning. Everyone might have joined, right? Who all have joined? Bharat has joined. Gopal has joined. Diksha has joined. Okay. Uh, am I audible? गोपाल आवाज आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है। आ रही है ना? हाँ तो बोलो ना यार। Not- ठीक है, दीक्षा भी आई आज। चलो। सो आई होप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं तो धीरे धीरे कर ही लेंगे आफ्टर ऑल। ठीक है। दीक्षा आई है नहीं आई है? नहीं आई है, देखते हैं। ओके। सो हम लोग कल कर रहे थे, वी वर डूइंग थोड़ा सा हाउ टू सी कि मैप का होगा फंक्शन, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैं कल एग्जांपल दे रहा था कि लेट्स से आपका फंक्शन एफ जेड है। ओके, एफ जेड हमने दे रखा था जेड स्क्वायर। ओके। सो अगर आपका फंक्शन एफ जेड है तो हम ये बोल रहे थे कि वेयर विल द लाइन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 1 वुड बी मैप्ड। फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट यहाँ पर कहीं पर इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 1 समझते हो? इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 1 हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। देखो समझो, एक होता है तुम्हारा, ऐसा समझो, एक होता है z प्लेन, ऐसा समझो। ठीक है, z प्लेन को मैं बोल रहा हूँ द प्लेन वेर यू हैव द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, वेर यू हैव द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। सो जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, सो हमसे कहा क्या जा रहा है कि लेट्स से आपका फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है और उसकी डोमेन सेट ये रही, और वो कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर डोमेन सेट में लेट्स से यू हैव दिस डोमेन ऑफ डेफिनेशन, लेट्स से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1। इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 1 समझते हो? y इक्वल्स टू 1। सो y इक्वल टू 1 तो ऐसे ही होगा ना। ये बोल रहे हैं इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स कहाँ जाके मैप होंगे अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। ओके। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले ही समझते हैं इस मैपिंग का मतलब क्या है। तो लेट्स से एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन? सो जेड इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स प्लस आयोटा बाय what would be z square? So z square would be obviously equal to x square minus y square plus 2 iota xy, isn't it? So what would I do? I would always write this as this way. मतलब I will not write it in a manner with plus 2 iota. I will write this way. So बड़े बच्चे बन गए, so we'll do this way. Okay. So eventually what will happen? If each of these points, that is imaginary part of z equal to 1, वाली line पे lie करने वाले सारे points, that is the points which are lying on the line y equals to 1, would get mapped to some points, would get to map to some points in, let's say, this plane I'm saying w plane. Okay, so where they will get mapped. So let us understand that particular point at first. So here you have imaginary part z equal to 1. What does it imply? It implies that your y is equal to 1. If I just try to write these y equal to 1 in z square, so what is z square? Z square will then be equals to x square minus 1 comma twice x, isn't it? भरत समझ में आ रहा है? यस सर। So that would mean u would be equals to x square minus 1. What is u? I'm writing in w plane u and v, and in the z plane I'm writing x and y. Okay. So what will be u? U would be equals to x square minus 1. U क्या है? U is a x coordinate in the w plane. V is the y coordinate in w plane. So w plane जो है, w plane क्या है? Image plane. This is your image plane. You can take it as an image plane. Image plane, what image plane? Here it is your these are your domain points. So the domain of definition, why I'm saying domain of definition, because domain would be a very topological term, which mathematics student may be aware of. That is, a domain is an open and connected set. So that is why I'm restraining the word usage domain. That is why I'm using domain of definition. So domain of definition implies that is all these points which are lying in the domain of the definition, that is these points are y equal to 1, where they will get mapped to under the transformation f z equal to z square. This was our preliminary inquiry.
So this is what it is written under the transformation. Where will the line imaginary part of z equal to 1 would be mapped under the transformation fz equal to z square. So what happens is, so your u would be equals to x square minus 1 because y is 1. So z square is equal to x square minus y square comma 2xy. Your u will become x square minus 1. Your v will become twice x. So what can you write? I mean, you can write it as, so eventually what we want the mapping in u and v. How would, what will be the relation in u and v? What will be the relation in u and v? So for that, you have to eliminate x. So try to eliminate x. So when you eliminate x, what you'll get v square by 4 minus 1. That would imply your v square would become 4u plus 4. As you are aware from your standard 12th class, this represents what? What does this represent? Gopal, ye kya hai beta? What is this? This is your parabola. Okay, so this is your parabola. So all these points which are lying on imaginary part z equals to 1 will eventually get mapped to a parabola under the transformation fz is equal to z square. So this will be a parabola with vertex minus 1 comma 0. So here equation is v square is equal to 4 times u plus 4. ओके, सो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सारे पॉइंट्स जो y इक्वल्स टू 1 पे लाई कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 1 समझ रहे हो, y इक्वल्स टू 1 या इमेजिनरी z इक्वल टू 1, इन सारे पॉइंट्स को, लेट्स से आपने कोई पॉइंट लिया, लेट्स से मैंने पॉइंट लिया, यहां से लिया लेट्स से 1,1, ये जाके कहाँ मैप होगा? ये किसी ना किसी पॉइंट में मैप होगा. उस पॉइंट का मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा? 1,1 मतलब ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 2. तो ये जाके मैप होगा 0,2 पे. ऐसे ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहीं ना कहीं तो मैप होंगे. ये कहीं ना कहीं तो मैप होंगे. ऑल दीज पॉइंट्स आफ्टर मैपिंग विल फॉर्म अ पैराबोला. ये समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट्स? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो ना. गोपाल को समझ में आया? यस सर. मोनिका को समझ में आया? हाँ जी सर. ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा, फिर बाद में सब हाँ बोल दो, फिर पता चला समझ ही नहीं आया. वो स्थिति मत कर देना. आज दीक्षा ही है क्या? दीक्षा बोल तो ले. आई तेरे को समझ में आया? सर मैं कोशिश कर रही हूँ. हाँ तो कोशिश ही कर. देख बेटा, अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं. ओके, अभी तक यू आर स्टडीइंग रियल एनालिसिस ना. सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट अपना पॉइंट पे मैप नहीं होता है, या ऑर्डर्ड पेयर पे मैप होता है. ओके, याद रहेगा? हाँ ना? तो बोल. हाँ, सो ऑर्डर्ड पेयर समझती है ना? आर स्क्वायर समझती है ना? यू अंडरस्टैंड आर स्क्वायर ना? अभी तो पढ़ा है लीनियर वेक्टर स्पेस कुछ दिन पहले, है ना? सो यहाँ पर कैसे मैपिंग होती है? यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जाके ऑर्डर्ड पेयर पे मैप. ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है, आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं ना. जैसे तू लिखती थी 3 प्लस आयोटा 4, याद कर. तो ये 3 प्लस आयोटा 4 क्या है? 3,4 ही तो है. समझ पा रही है? सो 3 प्लस आयोटा 4 यू विल रिकॉग्नाइज इट एज 3,4. सो बेसिकली जब तू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रहेगी, यू आर गोइंग टू हैव द सेम फ्लेवर एज यू हैड इन योर मल्टीवेरिएबल कैलकुलस. ओके, सो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर विल बी मैप्ड टू एन ऑर्डर्ड पेयर. दिस इज इट. इतना समझ ले. सो अभी हम क्या कह रहे हैं? मान लेते हैं fz इक्वल टू z स्क्वायर लिया, तो z स्क्वायर क्या होगा? x प्लस आयोटा y का स्क्वायर. हाँ या ना बोल? यस सर. है ना? तो z स्क्वायर क्या होगा? x प्लस आयोटा y का स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर. आयोटा y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस y स्क्वायर नहीं हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? माइनस में. ये तो पता ही ना. ओके, हाँ या ना बोल? और 2xy. ठीक है. सो यहाँ पे ये क्या है? ये बेटा इमेज हुई ना अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन fz इक्वल टू z स्क्वायर. xy की जो xy पॉइंट्स उसकी इमेज कैसे आएगी? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉमा 2xy. और ये कह रहा है कि उन पॉइंट्स का क्या जो y इक्वल टू 1 पे लाई करेंगे. सो ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन y इक्वल टू 1 विल बी मैप्ड समवेयर. सो उस प्लेन को मैंने बोल दिया w प्लेन. ओके, सो उसमें x स्क्वायर माइनस 1 हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, तो वहां पे मैं u बोल रहा हूँ, और 2x हो गया उसका y कोऑर्डिनेट, तो वहां पे मैं उसको v बोल रहा हूँ. अब ऑब्वियसली x कहाँ पे था? यहाँ पे था डोमेन सेट में. हमें कहाँ देखना है चीजों को? रेंज सेट में देखना है या रेंज वाले प्लेन पे देखना है. सो रेंज वाले प्लेन पे अगर देखना चाह रहे हो तो व्हाट यू विल गेट सम, you will have to eliminate x anyway. So eliminating x, you'll find that this forms a parabola. So यहाँ पे जो तुम्हें लाइन दिख रही है, under the transformation fz equal to z square, it will transform into a parabola. हाँ या ना?
Okay. ओके, चलो बढ़िया। So, दीक्षा को समझ में आ गया। दीक्षा अभी वो है ना मैथ्स से, और वो भी कल ही ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए दैट्स व्हाई। ओके, सो पहले एक छोटा क्वेश्चन करते हैं ना। पहले एक छोटा क्वेश्चन, अच्छा एक छोटा क्वेश्चन सब बताएंगे, मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे, फिजिक्स वाले बच्चे बताएंगे। पहले मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। वाई, सिंपल ना, कोई भी, मोहित भी दे सकता है। वाई रूट ओवर -1 इज नॉट रियल। सो वाई रूट ओवर -1 इज नॉट रियल। अभी हम बोल देना आयोटा है, वो तो उसका कुछ तो नाम देते तो आयोटा बोलते बेचारे। एनी आंसर्स? मोहित आंसर दे सकता है क्या? मोहित आया आज? So why root over -1 is not real? Okay. दीक्षा why? गोपाल बताओ। So मान लेते हैं let if possible, हम मान लेते हैं, चलो चलो मान लेते हैं let if possible there exists some real number whose roots happen to be root over -1, मान लेते हैं, let us understand ऐसा होता है ना? So अगर ऐसा होता that would imply x square would have been equal to -1, isn't it? Yes or no? And if x square had to be equals to -1, अब खुद सोचो, any real number in this world when multiplied with itself will always be positive. देखो कैसे, if x is positive and multiplied with again itself, that is again a positive number, so positive into positive is positive. If x was negative into negative, again positive. So anyway out, if you are taking any real number, x square has to be greater than equal to 0. And since x square has to be greater than equal to 0, it can never be equals to -1. So therefore we arrive at a contradiction. Okay, so those who are familiar with me, whenever I'll write this kind of symbol, it implies contradiction wise I'm proving it. Okay, so what was my assertion? My assertion was, let if possible there exists x belongs to R whose which corresponds to root over -1. So x square would be equals to -1. And if at all x square, if at all x is some positive number multiplied with itself, that is a positive number, would give me a positive output. If x is a negative number, x multiplied with itself, that is negative multiplied with negative, would give me positive. In any case, it cannot be equals to -1. So therefore, we arrive at a contradiction with regards to our assertion that there would have existed a positive, there would have existed a real number whose square root was equals to -1. So obviously, remember, root over -1 does not exist. That implies that, what does it imply? It implies that there is no such real number corresponding to it. So mathematician chose it to write as iota. Okay, no big deal, easy question. अच्छा, second चीज, always remember what ये चीज भी लिख लो हमेशा. Always remember x square would be always equals to positive of x. Okay, so whenever this is always remember this root over x square, whenever I'm always mentioning it as a non-positive. I'm mentioning it as a non-positive square root of number. Sorry, a non-negative square root of number. Sorry, non-negative square root of number. So why I'm stating this is, let me give you an example. So in standard 12, what you used to have, क्या पढ़ते थे हम बचपन में? हम ये पढ़ते थे कि if at all कोई number है ना? If at all कोई domain set में कोई point है, you cannot have two images of the same. This scenario is not possible in real systems. So in real analysis, you cannot have a non-unique image to a point. Okay, you cannot have a non-unique image to a point. So if you are having a function f x in real number, for every point you have a unique image. It may be possible that 2 points may have the same image. Let's say if fx is equal to x square, -2 will be also mapped to 4 and 2 will be also mapped to 4. That is not at all a concern. My concern is your one point, that is point in domain set, cannot be mapped to 2 points simultaneously. Okay, so let's say if you had this root over 9, okay, and Gopal said, okay, root over 9 for me is 3 into 3. So he would give an answer root over 9 to be equals to 3. And if Diksha comes and says, okay, no, -3 into 3 also makes up 9. So why not take root over 9 as -3? Okay, so in order to have a unique image
you have to put some sort of boundary to it. So what is a boundary? So whenever I'm going to say root over x square, it would always imply mod of x, not plus minus x. You'll always give me an answer as positive of that particular number. Let's say root over 9, so you will give me answer as 3, not minus 3. Okay, so these 2 points you just keep in mind, otherwise there would be some kind of problems later on. Okay, any issues till now? अरे कोई खाना बोलने वाला बंदा होना चाहिए. कौन है खाना बोलने वाला? अच्छा, गोपाल बोलेगा. No, sir. क्वेश्चन. हाँ, पूछो पूछो. कि आप ये जो नोटेशन यूज कर रहे हो, ये कोई स्पेशल केस है या फिर मतलब कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में, या फिर हमेशा तो अपन ऐसा यूज नहीं करते ना, क्योंकि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. हाँ यही, क्योंकि बचपन नहीं में नहीं तो नहीं अभी नहीं, तक हमेशा ऐसा ही यूज करते हैं, हमेशा ऐसे यूज करते हैं. लेट्स से देखो, रुक जाओ, अब मैं बता रहा हूँ. रुक जाओ. द क्वेश्चन इज, देयर आर 2 क्वेश्चंस टू योर प्रॉब्लम. फर्स्ट इज दिस and another one is this. These are 2 different things. This thing you will always say x is equal to plus minus 3. Okay, so is particular query ka answer kya hai? It's saying this particular equation says give me a real number whose squared, which when squared would give me 9. So this particular equation says give me a number whose square gives me a 9. So plus 3 ka square would give me 9, minus 3 ka square would give me 9. This is an equation. Here you have a function scenario. You are saying, I am giving you a number, give me the square root of the number. Okay, so if I am giving you 9, you cannot say the answer as 3 and minus 3. So here is a functional scenario, here is an equation scenario. Here you are writing an equation. So you are saying, give me a real number x whose square would give me 9. So you would say, okay, 3 would be such number and minus 3 would be such number. But here I'm asking in function sense, what is the square root of a number? So let's say if I'm saying root 9, that would give me 2 outputs. If I'm getting 2 outputs, this is not an equation. This is something I'm saying in functional sense, that give me the square root of a number if this function is a square root of function. So always remember, whenever I'm referring to a square root function, I'm always referring to the non-positive square root of that particular. Otherwise, it will lead to the non-uniqueness of images. And once you have a non-unique image, your function scenario will get will not be right. It cannot be explained, because for every point in real numbers, you should have a unique image. You cannot have 2 images altogether. समझ में आई बात? राइट. भरत को समझ में आई? Yes, sir. Sir, what's the like problem in having 2 images? There is a problem in having 2 images. See, you have one command. Let's say, इसको ऐसे समझो, you have a one command. Let's say I'm saying you just give me square of a number. Okay, so you cannot have 2 images. How can you can have 2 images? Like if you are saying I have to square a number, I would always go for, if 2 is square is, I will say it will be 4. I cannot say 2 ka square is 6. So if rule is unique, if the rule is unique, that is the function is unique, and function is stating one particular rule or one particular correspondence, so the image should be unique. So in standard 12th, when teachers used to say कि मुझे एक बात बताओ कि can circle form a mapping? बचपन में याद है क्वेश्चन पूछा जाता था, इफ नहीं भी आता तो मैं वापस रिवाइज कराता हूँ. पूछा जाता था, does circle form a mapping? You used to say no, circle cannot form a mapping. Why? Because here you will have this a square minus x square and y is equal to plus minus root over a square minus x square. So ये map कैसे form कर रहा है? For a particular x you are having 2 images of, so you will not be sure where you are. Like for example, if I'm saying give me the value of y for this particular point, you will say this is also the image, this is also the image. Which image you have to take? So always remember, this is the basic premise of defining function, that for every point in the set of domain, you have a unique image in the set of codomain, and that particular domain is said that particular image is called as the range under that particular function, range of that particular function, isn't it? So this is the very premise of your real analysis or function theory in real analysis, that the image should be unique. So your image cannot be non-unique. So that is why I'm saying you always remember this root over 9 is equals to 3. Okay? Or root over x square refers to the non-negative square root of a number. Okay? समझ में आई यहाँ तक बात?
Yes. ठीक है, and absolutely with no wonders I know that everybody would get a wrong answer to this particular question that I'm asking. Probably my students would get an answer to it. So the mathematics people would keep mum over this because उनको मैंने पूछ के परेशान कर रखा है. So you give me an answer to this particular problem. Okay. Limit x tends to 0, root over 1 minus cos 2x upon x. So I'm giving you all that is required. So अगर किसी को नहीं आता तो I'll write limit x tends to 0, sin x over x is 1. Don't worry about it. Okay. So all these parts everybody know. Just give me an answer of limit x tends to 0, root over 1 minus cos 2x upon x. फटाफट से. सर रूट 2. हाँ जी, रूट 2. रूट 2. ये है कौन? ये पक्का दीपक होगा. दीक्षा क्या आंसर बेटा? दीक्षा कहाँ गई? दीक्षा आवाज भी नहीं आ रही अब तो. यस सर. बेटा क्या आंसर? सर सॉल्व करिए, 1 मिनट. ठीक है. तो मॉड्यूलस में रूट 2. हाँ तो तू गोली मार दूंगा तेरे को. तू कौन सी लाइब्रेरी में रहता है आजकल? दीपक लाइब्रेरी कौन सी तेरी? तो फिर क्या मैं वहीं पे आके मारूंगा तेरे को? देखो मेरी बात सुनो. सो हुएवर ये इसने लिख दिया हॉस्टल में ही है. बक हॉस्टल में लाइब्रेरी. सो गोपाल क्या आंसर है बताओ? एक मिनट दे रहा हूँ ना. अरे तुम इतना बच्चों वाले क्वेश्चन में आंसर नहीं दे पा रहे हो. देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x नहीं होता? इसका रूट ओवर नहीं निकाल सकते फटाफट से? डिवाइड बाय x नहीं कर सकते फटाफट से? इसमें क्या है ऐसा? रूट 2 आगे आ जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0. हाँ जी गोपाल क्या आएगा आंसर बेटा? ट्रू या फॉल्स? शाश्वत है? सर फॉल्स है सर. मोड False लाइन सर हाँ शाश्वत बताओ बेटा. जस्ट अभी आया मैं तो. अच्छा जस्ट ही है. बहुत ही बढ़िया. ठीक है. अरे अभी अभी मैंने तुमसे क्या कहा था? आई वाज वेरी श्योर कि द टाइम आई एम राइटिंग दिस द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू मेक दिस इज रॉन्ग. रॉन्ग है सर. मोड साइन एक्स आएगा. मॉड साइन एक्स आएगा. अभी अभी मैंने सीखा. अभी अभी भूलोगे तुम इस चीज को. और ये जो लोग हॉस्टल में बैठे हुए हैं पूरे साल 2 बार यही चीज पढ़े हैं. सर रूट 2 आएगा, मॉड 2 आएगा. मॉड 2 क्या होता है? 2 तो होता है महाराज. सो मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा? अगर तुम पॉजिटिव साइड से जाओगे तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स. अगर नेगेटिव साइड से जाओगे तो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स नहीं हो जाएगा. सो देयर विल बी 2 लिमिट्स, रूट 2 एंड माइनस रूट 2. सो इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम में. इसका आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इसलिए इस चीज का ध्यान रखना. इसमें बार बार बोल रहा हूँ रूट ओवर का फंक्शन का ध्यान रखना. रूट ओवर फंक्शन विल ऑलवेज यील्ड यू अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. ओके. सो अगर मॉड साइन एक्स है ना, अगर पॉजिटिव साइड में रहोगे मतलब दैट इज अगर तुम इसकी पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट ओवर साइन ऑफ h अपॉन h हो जाएगा क्योंकि मॉड साइन एच के बराबर होगा. तो यहाँ आंसर आएगा रूट 2. लेकिन अगर नेगेटिव साइड में होगे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा? रूट 2 की जगह रूट 2 साइन माइनस साइन एच का मॉड प्लस साइन एच ही रहेगा. लेकिन नीचे माइनस भी तो आएगा. ये लिमिट चली जाएगी माइनस रूट 2 पे. सो देयर विल बी 2 लिमिट्स, 2 नॉन यूनिक लिमिट्स. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इतना सिंपल स्टैंडर्ड 12th का क्वेश्चन, यू हैव मेड अ मिस्टेक. सो याद रखना ये गलती होगी एग्जाम में. इसमें बार बार समझा रहा हूँ. रूट ओवर एक्स स्क्वायर ऑलवेज रिमेंबर गिव्स यू अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नंबर. और चिंता मत करो, इन बच्चों को मैंने कम से कम नहीं तो पूरे साल में ये बात कम से कम 6, 7 या 8 बार बोली होगी तब भी गलत कर रहे हैं. सो ये चीज भूलने वाली है. इसको प्लीज मत भूलो. ओके ओके. चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. एक पॉइंट है. लेट्स से x, y. दिस इज योर पॉइंट. This is your point. This is your point. This is your point x, y, and this is your unit circle. So under the transformation fz is equal to 1 over z, where this point would lie?
like where this point would get mapped to. This will be this, this will be this, this will be this, or this will be this. So your point is here. And obviously this is not to the scale, so don't worry about it. I'm just asking you an idea. If your xy point is this point, under the transformation 1 over z, where this point would lie? Would it lie in the first quadrant? Would it lie in the fourth quadrant? Would it lie in the third quadrant? Would it again lie in the fourth quadrant outside the circle? So question is very simple and straight. You have to just mention, you have to just write where this particular point would lie when transformed with the when transformed under the transformation 1 over z. So should I do this question or should I give some time? So same coordinate में ही होगा. Same coordinate. Shashwat says same coordinate में होगा. दीक्षा बेटा कहाँ पे होगा बताओ. So here is your function. Third quadrant में. Third quadrant में होगा. Third quadrant में inside होगा, outside होगा. अच्छा, inside outside तो fourth quadrant बताओ. Third quadrant में. Okay. So अभी देखो ये हो गया x और ये है unit circle, याद रखो. This is your unit circle. So you have a unit circle. The point lies inside the circle. So whenever point lies inside the circle, you can write x square plus y square less than. Because had it been on the unit circle, the coordinate would have been, the equation would have been x square plus y square equal to 1. So it is lying inside. So you will write x square plus y square less than. Yes or no? Yes. Fairly simple. Okay. So now what would be fz is equal to 1 over z? Let us first understand this particular thing. So fz is equal to 1 upon z. What we can do? Everybody is aware of conjugate of number, conjugate of a complex number. If you are not aware, let me write. So conjugate of a number is the mirror image of that particular number. That's x comma y. So it will give you x minus iota y. So if your number is this place x comma y, so conjugate will give you the mirror image. Here it is. So mirror image with respect to x-axis is your conjugate of a number. So this is your conjugate. So if this is your z, this is your z bar. No issues. I don't think there is an issue. So basically, what is z? What is z bar? Z bar is nothing but the reflection of z with this x-axis. Are you getting my point? Reflection means what? I mean, you have to have a same distance. The distance is same. It's just the reflection of the number z with respect to the x-axis. That is why he's equal to z. Okay, so conjugate of a number. I think you must be aware of this. If you're not aware, this is the conjugate. So what do? We'll multiply with respect to conjugate, and everybody knows probably. And if you don't know, I'll write it all over. So z when multiplied with z bar would give you z bar per square. Okay, so this is x square plus y square. You can self-verify it on your own self. So x plus iota y, which when multiplied with x minus iota y, would eventually give you x square plus y square. I don't think this is an issue for anybody here. So you will get this eventually. Answer would be what? This will be x minus iota y divided by x square plus y square. So what is your fz? So if your point is x comma y, Yes, it will transform to what points? It will transform to point x upon x square plus y square, comma, minus y upon x square plus y square. So in your z plane, if the points are x comma y, and if you are using the transformation 1 over z, in the w plane, the coordinates will be x upon x square plus y square and minus 1 upon x square, minus y upon x square plus y square. Is it? समझ में आई मेरी बात बेटा? जी sir. Okay. So in any case, your coordinate x would be positive. Your coordinate y would be negative. Okay. Your coordinate x would be positive. Your coordinate y would be negative in the w plane. So this is your u. So this is your u, I think. Sorry. This is your u. And this is your v. So your u would be positive in any case. And your v would be negative in any case, because x square plus y square is bound to be positive. So remaining term is negative. So overall it will be negative. So just see to it. Just see that which of the option had this kind of possibility. So the possibility for this option would be, you see, you cannot have the first option because the first option insists you to have x positive and y positive, because in first quadrant both are positive. So this cannot be the scenario.
This also cannot be the scenario because x has to be negative and y has to be negative. Not possible. So there are two scenarios, either C or D. Okay, so either C or either D would be an answer. Let's see which will be the answer for this particular question. Okay, are you getting my point till now? I don't think there is an issue. Okay, okay. So after having done this, what can we do? So in order to justify whether your point lies inside the circle and outside the circle, what are you supposed to do? So you have to know your you have to see whether your u square plus v square is greater than 1 or u square plus v square is less than 1. देखो मेरी बात समझो, यहां पर xy था, ये पक्का पता चल गया कि ये xy जाके कहां मैप होगा, ये मैप होगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, कॉमा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, ये गारंटी है. दिस इज योर u, दिस इज योर v, सो ये कहीं जाके यूवी प्लेन पे मैप होगा. पहली चीज समझ में आई. ये भी पता है कि ये ऑप्शन सी या डी में होगा, या तो ये यहाँ होगा या यहाँ होगा. सो ये पक्की बात है, अगर अंदर होगा दैट वुड इंप्लाई दैट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, और अगर बाहर है दैट वुड इंप्लाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज ग्रेटर देन. So let us understand कि u square plus v square होगा क्या. So just do this. So this will be x square upon x square plus y square का whole square plus y square upon x square plus y square. So in any case, this will be equals to what? This will be equals to 1 upon x square plus y square. Please remember this point x comma y was inside the circle. So your x square plus y square was less than 1. And what is your u square plus v square? U square plus v square comes out to be equal to 1 upon x square plus y square. And since x square plus y square is less than 1, 1 upon x square plus y square will be greater than 1. That implies your point will lie outside the circle, not inside the circle. So the answer would be, the point would lie in the fourth quadrant and the point would be outside the circle, not inside the circle. Okay, so this would be your answer. समझ में आया? नहीं है? किसी को नहीं आया तो प्लीज पूछ लो. भैया एक बार इनसाइड आउटसाइड वाला पॉइंट का कॉन्सेप्ट वापस रिपीट करना. ओके, सो देखो मेरी बात समझो, ये बात समझ में आ गई कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट, इजंट इट? ये समझ में आया? क्योंकि u तो पॉजिटिव है और v नेगेटिव है, तो u पॉजिटिव v नेगेटिव, w प्लेन के अंदर जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब तुम चौथे क्वाड्रेंट में हो. ठीक है, यस. अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो u और v है, अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सर्कल के बाहर हो, और अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1 हो तो तुम सर्कल के अंदर हो. मतलब यहाँ पर भी तो यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वो जो चार ऑप्शंस लिखे हैं वो यूनिट सर्कल. अब तुम देखो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर करने गए, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर किया तो कितना है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. u क्या है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. v क्या है? माइनस 1 अपॉन माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. चेक करना, इनको ऐड करोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओवरऑल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा 1 प्लस x. अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वहां पर हम जान रहे थे कि x और y में रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाज लेस देन 1. याद करो इनिशियली जब सर्कल हम ले रहे थे तो डोमेन सेट, ठीक है, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1. ये ग्रेटर देन 1 आ गया, इट इंप्लाइज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर भी क्या है? ग्रेटर देन. इन एनी केस इट वुड लाई आउटसाइड द सर्कल. ठीक है, ओके, थैंक यू. ओके, सो अभी किसी को इश्यूज? दीक्षा को इश्यूज बेटा? नो सर. नहीं, चलो वेरी गुड. ठीक है, ओके, चलो. सो अब ये क्वेश्चन करो, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं करा ही देता हूँ तुम्हें, बस टाइम कम ही है. सो देखो, हाउ टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो लेट्स से z इज इक्वल टू xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो वो कह रहा है xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस y ग्रेटर देन 1. पहले तो मुझे अच्छा एक काम करता है, थोड़ा सा रीजंस भी समझते हैं. ये कौन सा रीजन होगा पहले समझे? व्हाट वुड बी दिस रीजन? सो याद करो, x जब भी कभी रीजन की बात आए तो मेन इक्वालिटी को भूल जाया करो, इक्वालिटी सोचा करो. तो xy इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रेक्टेंगल हाइपरबोला. अरे यार सॉरी. सो xy इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है. याद करो, नहीं भी याद आ रहा हो तो जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो ऐसा सोचो यार, xy इक्वल टू 1 हो गया तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x नहीं हो गया? इतने प्लॉट्स बनाते हो पीएचडी में, इनवर्स रिलेशनशिप, ये ऐसे तो जाएगा और क्या आएगा? ओके, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, और x प्लस y ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू माइनस y कर दो, मतलब इक्वल टू 0 कर लिया करो. तो वो कैसा होता है? ऐसा होता है.
So x plus y greater than 0 and xy greater than equal to 1 would imply this particular region. समझ में आई बात? ये हो गया xy equal to 1, ये हो गया x plus y equal to 0. So ये कह रहा है x plus y greater than 0 मतलब इसका ये रीजन, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये रीजन. इन दोनों में कॉमन रीजन क्या है? ये इनमें लाई करने वाले सारे पॉइंट्स कहां जाके मैप होंगे? अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर. एक आइडिया देना है, जस्ट में पूछा क्वेश्चन है फिजिक्स का ये. ओके, सो हाउ वुड यू डू? सो अभी हमने पढ़ा है कि जेड स्क्वायर मींस नथिंग बट इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा ट्वाइस एक्स वाई. यस और नो? Okay, so your u would be equals to x square minus y square and your v will be equals to what? 2xy. मानते हो? हाँ या ना? ठीक है. और यहाँ देखो u और v नहीं लिखा है, तो u और v का कोई मतलब नहीं है. मतलब उस प्लेन पे भी वो x y के सेंस में पूछ रहा है. वो कह रहा है कि z अगर x y greater than equal to 1 है और x plus y greater than 0 है, that is if you are finding if you are seeing some complex number such that the product of x and y, that is the real part and imaginary part, is greater than equal to 1 and imaginary part and real part is greater than 0, then under the mapping where it will map. तो यहाँ सारे ऑप्शंस है ना x और y में दे रखे. तो ये y मतलब क्या है? v है, और x मतलब यहाँ पर क्या है? u है. समझ रहे हो मेरी बात? ये ऑप्शन से मत कंफ्यूज हो जाना. ये तुम्हारा डोमेन है. ये डोमेन कहाँ जाके मैप होगा? अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर. सो ऑब्वियसली एक w प्लेन पे मैप होगा. w प्लेन पे u और v यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये लोग x और y लिख रहे हैं. समझ पा रहे हो मेरी बात? सो ये कंफ्यूज मत होना. ये मत कहना सर यहाँ तो v नहीं लिखा है, u नहीं लिखा है, ये क्या हो रहा है? ओके, सो अंडरस्टैंड कि x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज v क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मानते हो? मतलब जो इमेज सेट होगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इमेज के अंदर, इमेज में y क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2. और इमेज में x कोऑर्डिनेट जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब सोचो x रियल है, y रियल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो कुछ भी हो सकता है ना. इट कैन बी एनी पॉसिबल थिंग, इजंट इट? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है. सो यू कैन बिलोंग टू एनी रियल आर, नो इश्यूज. बट v पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि v किसके बराबर था? 2xy, और xy क्या दे रखा था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. दैट इंप्लाइज v हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इसका मतलब यहाँ पे लाया करने वाले सारे पॉइंट कहाँ जाके मैप होंगे? उन सारे पॉइंट पे मैप होंगे जहां x तो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2. आंसर क्या होना चाहिए? आई होप समझ में आया यहाँ तक. किसी को डाउट हो तो पूछ लो प्लीज, क्योंकि अभी नेक्स्ट मीटिंग से ज्वाइन करेंगे फिर अपन. एनी इश्यूज? देखो ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर दे रखा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 2xy दे रखा है. ये बोला जा रहा था कि डोमेन सेट में अगर सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पे xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन 0, वेयर दिस पर्टिकुलर डोमेन सेट वुड बी मैप्ड. सो हमने क्या देखा कि अगर xy ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, देन 2xy वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इजंट इट? तो जो y कोऑर्डिनेट होगा इमेज प्लेन के अंदर, वो उसके अंदर क्या बाउंड्री होगी कि v हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. या ऐसा मैं कह सकता हूं कि y coordinate in the image plane will be greater than equal to 2, and x coordinate can be any possible thing because it is x square minus y square. It can be any possible thing, so it can belong to real R. So for all x, y has to be greater than equal to 2. So your option number C seems to be right. So this is your question in jest. So we'll meet in the next meeting. तुम वहां पे join करना, okay? Okay, no issues. हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा. ओके Yes, sir. ठीक है. Yes. Sir,